हाय अंकित, क्या लगता है डे हाँ थ्री? यश। डे 3 इंडिया और इंग्लैंड बस 6 रन का डिफरेंस है फर्स्ट इनिंग्स के बाद। व्हाट डू यू थिंक इज आवर फेवरेट्स एंड मैच इवन है अभी तो। आई गेस मैच इवन है कंसिडरिंग कि जिस तरीके से इंग्लैंड प्लेयर्स खेलते हैं बेसबॉल। मुझे लगता है कि हमें रन काफी ज्यादा बनाने पड़ेंगे। और कंसिडरिंग कि हमारी पहली इनिंग में भी हमारा लाइक लास्ट के 6 विकेट्स कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है कि स्टिल ट्रिकी। कम से कम हमें 350-400 रन की लीड लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लैंड फेवर करता है फोर्थ इनिंग में चेस। और जिस तरीके से उनके प्लेयर्स खेलते हैं, ब्रुक देख लो आप, ओली पोप, बेन स्टोक्स, एक दो बंदे भी अगर थोड़ी देर टिक गए तो लाइक दे कैन हिट सेंचुरी। तो मुझे लगता है 350 रन बनाने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने फर्स्ट इनिंग में खेला कि 3 सेंचुरी मारने के बाद हमारे टेलेंडर्स और बाकी लोअर ऑर्डर कुछ कर नहीं पाया, तो वो कभी भी हो सकता है। तो अभी मुझे लगता है मैच इवन है, बल्कि मैं बोलूंगा कि इंग्लैंड थोड़ा आगे है, क्योंकि हमें और लीड लेनी चाहिए थी। जिस तरीके से हमने कैचेस छोड़े, हमने उनको जल्दी आउट नहीं किया। बट आई थिंक हियर वी आर। बट लेकिन आई गेस मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि हम पहले टेस्ट में ऐसा खेलेंगे। अब चाहे पिच अच्छी हो, चाहे जैसा भी हो, बट हमने बैटिंग अच्छी की। 3 सेंचुरियन इंग्लैंड में फर्स्ट टेस्ट। लास्ट टाइम पता नहीं कब देखा था, लाइक आई गेस 2002 में जब हमने लीड्स में खेला था। विकेट शायद वैसी है, मुझे लगा थोड़ी इजी विकेट है, इसलिए हमने अच्छा भी खेला। बट आई थिंक क्रेडिट गोज टू शुभमन गिल, ऋषभ पंत, जायसवाल। इंग्लैंड में सेंचुरी मारना कभी भी आसान नहीं होता। लेकिन मैच अभी इवन है। आई वुड गिव स्लाइट एज टू इंग्लैंड। या से आई एग्री, क्योंकि उनने पहली बार 2 विकेट्स ऑलरेडी वेर डाउन। एंड अगर मॉर्निंग फर्स्ट सेशन में 2 और या 1 विकेट होता है तो काफी प्रेशर में आ जाएगी इंडियन टीम, और टेल से तो हमें ज्यादा उम्मीद है नहीं। वी आर नॉट। अगर 2 विकेट सुबह सुबह आते ही गिर गए तो हम 250 पे अलाउड भी हो सकते हैं, बल्कि 200 पे भी हो सकते हैं। या तो मैच कल खत्म हो सकता है हाँ, कल इफ भी दिस खत्म हो बैस सकता बॉल। है, या क्योंकि वो तो 6 के रन रेट से मारेंगे, चाहे कितना भी बनाए हम। तो मैच ड्रॉ नहीं होने वाला। मैच जल्दी खत्म होगा, चाहे कोई भी जीते। सो लेट्स टॉक अबाउट बैस बॉल। ये टर्म जो शुरू हुई है बेन स्टोक्स एंड ब्रेंडन मैकलम की पार्टनर जो भी केमिस्ट्री उसकी वजह से आया हम्म। है। दे आर नोन फॉर अ सर्टेन ब्रांड ऑफ क्रिकेट। I'm making a parallel here. Let's talk about SRH, जो उनने लास्ट हाँ। सीजन एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला कि भाई 250 तो इज अ नॉर्म, 300 इज द न्यू, शुड बी लाइक द नेक्स्ट टारगेट। तो ये जो नया ब्रांड इनने खेला, एसआरएच ने बनाया, इस सीजन हमने देखा कितनी टीम्स इजीली 200 250 तो आराम से बना रही है। सिमिलरली जब बैसबॉल स्टार्ट हुआ उसके बाद काफी टीम्स ने 4 5 6 के रन रेट से मार रही है। तो ये इज दिस द न्यू नॉर्म इन टेस्ट क्रिकेट? क्या हम वो पुराना टेस्ट क्रिकेट जहाँ पे 1 2 3 का रन रेट चल रहा है एकदम आराम से चलता था? क्या व्हाट आर योर थॉट्स कि क्या ये दिस इज दिस द न्यू नॉर्म? आई थिंक क्रेडिट गोज टू इंग्लैंड। हम उनका मजाक उड़ाते थे पहले कि वो वनडे में भी टेस्ट की तरह खेलते हैं, लेकिन जिस तरीके से ब्रेंडन मैकलम ने आके, ही हैड हिज ओन स्टाइल। मुझे याद है लास्ट इनिंग में ही केम एंड लाइक हिट सेंचुरी, लाइक 100 स्ट्राइक रेट, राइट। तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड वे टू प्ले। इससे रिजल्ट ज्यादा आएंगे। इट्स अ डिमांड ऑफ द पब्लिक एज वेल। मतलब मुझे नहीं लगता कि आप कोई 5 दिन 3 के रन से देख सकता है। आप 3 4 दिन में मैच खत्म करो, रन मारो। आई थिंक ग्रेट अप्रोच। टेस्ट क्रिकेट को इंग्लैंड ने रिवाइव कर दिया है। एटलीस्ट इंग्लैंड में तो आप देखो कि लोग आते हैं देखने के लिए, और मजा आता है। मतलब लगता है इंग्लैंड से खेल रहे हैं तो लोग मारेंगे, तो कोई भी आके मार देता है। लाइक दे आर नॉट सुपरस्टार्स, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि लाइक दिस इज व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ। और मुझे लगता है T20 ने हेल्प किया है कि नाउ पीपल रियलाइज कि द काइंड ऑफ शॉट्स दे हैव, राइट। तो मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट ग्रेट प्रमोशन फॉर टेस्ट क्रिकेट। आई थिंक मोर एंड मोर टीम्स विल स्टार्ट प्लेइंग मोर शॉट्स। एंड आप देखते हो लाइक वी हैव स्टार्टेड सिलेक्टिंग पीपल बेस्ड ऑन IPL फॉर्म। लाइक सुदर्शन वुड नॉट हैव कम अगर IPL ना देखते, क्योंकि लाइक अय्यर इज नॉट देयर। सुदर्शन का कोई अच्छा फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी नहीं है। He has 39 का एवरेज, आई गेस। तो लगता है कि पीपल आर लर्निंग फ्रॉम T20s। टेस्ट क्रिकेट एक्साइटिंग हो रहा है। दैट्स व्हाट पीपल वांट टू सी, आई गेस। आई डोंट नो, पीपल विल वॉच कि आएंगे 5 दिन देखेंगे। आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट थिंग फॉर टेस्ट क्रिकेट, तो लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। या आई एग्री। बैसबॉल का बहुत मजाक उड़ाया गया, बट क्योंकि एज एन इंडियन फैन आल्सो मैच पॉइज्ड अभी, बट आई एम स्टिल द ओनली थिंग आई एम वरीड अबाउट इज व्हेन इंग्लैंड कम्स टू चेस फॉर इन फोर्थ इनिंग्स। कोई भरोसा नहीं है दे कैन। एंड स्पेशली आई रिमेंबर, for me, the greatest test match was when Ben Stokes won against Australia. It was in Edgbaston, right? 9 wickets down, and क्या victory थी Ashes में वो तो।
थोड़ा तो है, वो याद आता है कि he is capable of doing that, and yeah, he's in good form right now in bowling I for think sure. the thing with baseball is like someday you can look really great and then someday you can look stupid. So that's the problem with that kind of game. Like it's like आप कभी जीत जाओगे कभी हार जाओगे and like you will hear the criticism, right? तो मुझे Yeah, लगता है कि it's a 0-1 approach. You win or lose. But I think I love the way they play. मुझे लगता है कि हमने इसकी इसकी हिंट हमने देखी 2005 सीरीज में देखी थी एशेज में जब फ्लिंटॉफ केविन पीटरसन और ये लोग जब मारते थे आई थिंक दे हैड समथिंग बैक देन बट बीच yes, में थोड़ा स्लो हो गए थे लाइक व्हेन माइकल वॉन एंड बेल वर प्लेइंग लाइक दे स्लोड डाउन और लगता है कि इंग्लैंड काइंड ऑफ कंप्लीटली टर्न्ड अराउंड द टेस्ट क्रिकेट और the reason people are choosing test cricket, right? Like they're yeah, producing some great players now. Who would have imagined like Harry Brook would come and like he'll score centuries at 90 strike rate, right? From England. yeah, So I think it's a great way to play. You yeah, will win some, you lose some, but at least they're making the cricket exciting. yeah. I agree. I mean, the kind of approach baseball and even SRH जो खेली है last season से इस season, you will there will be some risk associated with this Yeah. approach. So you will win some, you will lose some. But kudos to both the teams to creating a new history. Will remember these two teams to Yeah. create this brand of cricket. But I think it will also depend कि ऐसे kind of bowling they face, right? जैसे कि अगर जब ऑस्ट्रेलिया आएगी, can they play the same way in against Australian pace attack, right? हमारा पेस अटैक लाइक इफ यू से लाइक हमारे पास सिर्फ बुमराह एक बॉलर है बाकी पता नहीं तीन चार लोग क्या कर रहे हैं लाइक ही इज ब्रेकिंग हिज शोल्डर हिज बैक टू टेक विकेट्स 5 विकेट उन्होंने लिए 4-5 कैच छूटे उनके आई थिंक ही इज द ओनली बॉलर वी हैव तो हम मुझे तो लग रहा था इंग्लैंड जाने से पहले कि हमारी बैटिंग कमजोर है बट अब 3 दिन का लग रहा है कि हमारी बॉलिंग कमजोर है तो पता नहीं क्या होगा तो so आई गेस फोर्थ इनिंग में बुमराह अगर इंजर्ड हो गया कुछ हो गया ही कैन नॉट बॉल बाकी 3 तो मुझे लगता है 5-6 के इकोनॉमी से पिटने वाले हैं yeah, at some point ये तो बोला गया है start of the series की भाई बुमराह 5 के 5 मैच तो नहीं खेलने वाला, might play हाँ 3 or 4, but बुमराह we know he is, I don't know आज की जनरेशन ये समझ पा रही कि if he performs like this for next few years again more, he will become the greatest of all time bowler. I think 150 years of cricket history कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसने दो फास्ट बॉलर जिसने 200 विकेट्स लेस देन 20 एवरेज से लिया हो, तो इट्स अ बिग स्टेटमेंट. मतलब ये हम नॉट जस्ट अभी के ग्रेड से कंपेयर कर रहे हैं, जॉश हेजलवुड, पैट्रिक कमिंस, मिच स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं पुराने लेजेंड से एज वेल. तो किसी से भी कंपेयर करो, ही इज जस्ट ब्रूटल, रूथलेस. क्या मतलब, एब्सोल्युटली पता नहीं मुझे इंडिया के पास बॉलिंग में इसके अलावा कुछ लाइक व्हाट्स आवर प्लान बी. मतलब अगर बुमराह नहीं चले, लाइक यू सेड, इंजर हो गया, तो हम क्या करने वाले हैं? जैसे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हुआ, जब तक वो खेल रहा था वी हैड दैट स्पार्क, बट आई सो थिंक what does India have? plan B is like baseball, right? Like if Bumrah doesn't fire, then they will just chase it easily. So I think Bumrah credit goes to his ability. Like अगर वो 5 टेस्ट मैच खेलते तो शायद कैप्टन होते. But he said like वो 3 से ज्यादा नहीं खेलेंगे. But I think जब हम आगे बुमराह का देखेंगे in time कि किस तरीके से ही मेड एन इम्पैक्ट मे बी शायद विकेट्स नंबर ऑफ ईयर्स वो रैंकिंग में नहीं आएंगे लाइक ही मे नॉट क्रॉस 500 विकेट्स ही मे एंड अप एट 350 विकेट्स राइट so I think it will be the responsibility of our generation to tell people how impactful Bumrah was The like impact. the impact was the biggest he has produced I think I have never seen anybody who produced same kind of impact the last I remember जिसके हमें stats नहीं पता या stats ज्यादा नहीं है लेकिन the one bowler who made impact was Shane Bond. He was one bowler like who whenever he bowled he looked like taking wickets every ball Yeah. right he played short like 5-6 years he made an impact he went away but I think that's how we will remember Bumrah like we'll have to watch how he made an impact like T20 World Cup 50 over World Cup this test match Australia right like I think you'll have to see the highlights to see how good Bumrah was the numbers may not show right And I remember उस बंदे ने भी कितना कुछ how much he went through his career. yeah इंजर हो गया था तब उसको कितना क्रिटिसाइज किया. ओके, इंपॉर्टेंट मैचेस, वर्ल्ड कप से पहले इंजर हो गया है, क्या काम का है, XYZ.
But look back like the past 5, 7, 10 years. This guy has been just phenomenal. I I think mean, we have to save him. It's like a limited currency that you have to spend like wisely for next 5 6 years. So आपको you have limited time of Bumrah. आपको decide करना है whether you want to spend in Test match cricket or you want to spend in one day or T20s. I think we have to protect him and like we have to use him wisely. भले Test series हार जाएं कुछ हार जाएं, but I think we should not waste him. ऐसा तो मुझे पता है, मैं काफी टाइम से क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, इट्स माय फेवरेट स्पोर्ट। जैसे ये है ना कि बुमराह को सेव करो, ही इज अ ट्रेजर। आई हैवंट सीन एनी बैट्समैन आल्सो कि हम बस, obviously we had the likes of कोहली, धोनी, तेंदुलकर, बट ऐसा मतलब बॉलिंग में हमारे पास कभी कुछ आया ही नहीं कि हम ऐसा बोले कि वाह, वी हैव अ लाइक अ मैच विनर जो कभी नहीं हमेशा जिताएगा आपको। I think लोग आए भी हैं like they had pace या वो थोड़ा आगे आ ही रहे थे, they got injured. तो लगता है कि हमने पहले कई सारे बॉलर्स का ध्यान नहीं रखा है. Like उमेश यादव इज वन, like how good was he, right? Like हमने उसको कभी नर्चर नहीं किया या he went away, right? कितने पेसर्स आए जो 150 की बॉल करते थे लेकिन हमने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया. I think Bumrah is special. I think I don't know, like without him, what we would do in this test series. So make sure he stays fit, and other bowlers have to pick up some work, right? Like he Yeah. cannot bowl like 50 overs in a test match. Do you think, Ankit, Indian selection team made a mistake of not bringing Mohammad Shami to England? I think it was. He has been a quality top bowler. I know he just came back from injury. He didn't have a not like great IPL, but Yeah. still the experience, the quality he brings to the table. Will India miss Mohammad Shami? I think definitely. मुझे लगता है कि अगर इंग्लैंड ने पहला स्पेल निकाल दिया बुमराह का, तो आई थिंक इट्स फ्री रन्स आफ्टर दैट. क्योंकि बाकी बॉलर्स में ना तो बाउंस दिख रहा है मुझे, या तो विकेट ऐसी है, ना ही स्विंग दिख रहा है. आई थिंक बुमराह इज द ओनली बॉलर हु लुक लाइक टेकिंग विकेट्स, राइट? और मुझे लगता है कि अगर इंग्लैंड बेस्ट बॉल ना खेले शायद बाकी लोगों को विकेट ही ना मिलते. Yeah. So I think Shami would have been a great partner to Bumrah. I think Shami's strength lies in the middle overs, right? जैसे बॉल पुरानी होती है, the way he reverse swings, right? इस विकेट पे he would have been deadly. तो मुझे लगता है कि शमी को will definitely miss. I don't know what the issue is, like क्या वो injured है या he's dropped. Uh, I think he still has some more years to play for India. And he's a fourth innings expert for us. Really? Fourth innings का average उसका बहुत better है compared to the first. Yeah, look at the straight seam. मुझे लगता है कि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं. Like he bowls at 140 click all the time. I think he should have been in the team. Yeah, I agree. Let's talk about the three young guns जिनके भरोसे I guess विराट and रोहित ने retire किया है. यशस्वी जायसवाल. Yeah, I mean, I kind of agree. Kohli to definitely. We'll talk about Kohli and Rohit, but let's start with Shubman Gill, Yashasvi Jaiswal, and Rishabh Pant. ये पूरे I think 23 से 27 year old की range में है, but क्या talent है. मतलब India, I feel we have made so many great batsmen, but नई जनरेशन इस एज में आके फर्स्ट मैच में इस तरह परफॉर्म करना, what a statement. I think so. Like मुझे तो लग रहा था कि like पहले घंटे में 30 पे 5 हो जाएंगे, but again like एक ही मैच है, we should not judge too quickly, but I think it's a great start. I think start of a new phase for Indian cricket. तो मुझे लगता है कि गिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एज अ कैप्टन टू स्कोर अ सेंचुरी इन फर्स्ट मैच एज अ कैप्टन, बिकॉज हम बात कर रहे थे सेना में, लाइक सेना कंट्रीज में ही हैज लाइक 13 एवरेज. मतलब गंभीर से हम कंपेयर कर रहे थे कि लास्ट गुड इनिंग वाज इन ऑस्ट्रेलिया जो हम गावा में जीते थे, राइट? So I think it's very important for him कि he played a good inning, he got a century. It will help him to lead now. He will earn that respect. So I think as a captain, if you don't score runs, you don't get respect, right? Why did Kohli get respect in Test cricket? Because he was like scoring runs anywhere where he wanted, right? So I think it's very important for Gill to have gotten the century. So I think great start for his career. Again, like we'll see like how it goes. एक ही match है, we should not judge too quickly. Rishabh Pant, like I think he has shown everything, right? Like we knew what he can do. Sixth international century. Yeah. So I think it's just his own personal best ball or Pant ball. I think he plays this way all the time. Sometimes
he misses. Like I remember like Gavaskar's commentary, stupid, 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 right? So you get with him, right? Like kabhi marenge, kabhi nahi marenge. So I think that's how he is. Jaiswal, I think Jaiswal is the new sort of the betting upcoming betting legend, right? The person who will take Indian betting forward, right? He is the betting star, as I would say, right? He's like 2021 already, like he scored centuries in Australia, in England. कल ही मैं देख रहा था, like he played 20 test matches in like 19 different grounds and 5 different countries and he averages 54. Yeah. India का highest betting average in test cricket is 54 by Vinod Kamli. So he's still at 53. मुझे लगता है कि Jaiswal is the flag bearer of Indian batting in future. Of course, Gill will be there, but my money is on Jaiswal. Like I totally agree with you, Ankit. Gill very well deserved captaincy. उसको वो बनता था, उसने बहुत परफॉर्म किया. बट याद है विराट कोहली, जब यंग विराट कोहली आया था, युवराज सिंह इंजर, कोई इंजर हुआ, वो इंजरी एज अ इंजरी रिप्लेसमेंट एक दो मैच खेला, जब जब चांस मिला उसने मारे. He was consistent. He made sure कि he whatever chances he got, he'll just score runs, knock on the door all the time. Same hunger, same passion I see in Yashasvi Jaiswal. Aggression नहीं है, not yet, but वो जो हंगर होती है ना, जो दिखता है कि भाई मेरे को खेलना है, मेरे को मैच खिलाओ, मुझे गेम खिलाओ, मैं रन मारूंगा, वो aggression, वो hunger, I see that in Yashasvi Jaiswal. So I totally agree with you. I hope कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं आया उसकी लाइफ में. he shows consistency in his hunger and passion. So I mean, I'm very optimistic. I think he should learn from some of these kind of the experience from Prithvi Shaw or some contemporaries, right? Like he should learn from them and not be distracted. I think I don't know कितना टेस्ट क्रिकेट आगे खेला जाएगा, कितने मैचेस होंगे आगे, क्या 100 टेस्ट मैच कोई खेल ही पाएगा नहीं खेल पाएगा, बट आई थिंक whatever cricket he will play, I think he will do great. Yeah. Let's talk about the two big names that are missing from the series. Yeah. Virat Kohli and Rohit Sharma. Is it too early to say we are missing them, especially Virat Kohli? And do you think कि I think बहुत जल्दी रिटायर हो गए? मैं एक मीम देख रहा था कि पीपल आर मिसिंग जब 50 पे 0 विकेट थे, लाइक काश शर्मा होता तो हम 1 विकेट डाउन हो जाते. But I think I don't think we'll miss them. Anyway, Test cricket में they were not performing, right? Like Virat Kohli for a long time, Rohit Sharma for a long time. So I think Sharma was expected कि he should have retired maybe earlier. Age was not on his side, fitness was not on his side, right? So I think, or even his heart was not in Test cricket. तो मुझे लगता है कि he should have retired long time back. I think that was a fair call. चाहे retirement दिलवाई गई हो या खुद ली गई हो, I think I agree with that. I think Virat Kohli, मुझे लगता है कि fitness wise he had maybe couple more years. Cricketing wise, I think he should have given this series more, right? So I think ये 5 टेस्ट मैच और मिल जाते, so that would have settled any doubts, right? या तो मार देते या तो he would have been like मांजरेकर ने बोला like former cricketer would have nicked it. तो मुझे लगता है कि ये 5 टेस्ट मिल जाते तो would have been comfortable for everyone, right? Like सबके लिए closer हो जाता. That's what I would say. कि रन आ जाते तो खेलते, नहीं आते तो would have been like चलो ठीक है एक मौका और दिया. And I think he was preparing for it. मुझे लग रहा था कि like he was ready to play in England. His new home, right? Yeah. So but I think there's something political beside for his retirement, right? मुझे लगता है कि there was personally he wanted to play. तो मुझे लगता है कुछ तो political reasons थे जिसकी वजह से he retired. But I think I mean we'll miss Virat, the captain, the energy. Aggression. I'm not sure we'll miss the batting as such. Yeah, I agree, and we will miss them. And as a player, it's always best अगर लोग पूछ रहे कि वो मतलब it's always best कि if they're asking why are they not in the squad, Yeah. rather than questioning them, okay, why have they not retired? So I think from their perspective, great timing. But yeah, they will be, they are legend, and they'll be remembered in this format for sure. I mean, I think Test match में we'll see like Virat Kohli like future में his stats may not sound that good. If you rank them like सारे Test cricketers में like again like 9,000 रन हर किसी ने नहीं बनाए, like इंडिया में 9,000 रन से 3 लोगों ने बनाए 10,000 रन, right? तो मुझे लगता है कि
I think he's number 4 in the top run scorers for India. Not a small thing, but everybody expected 10,000 runs from him, 100 centuries, right? मुझे लगता है something happened after COVID, kind of his graph kind of fell off. And we saw कब बीच में glimpses देखे हैं, like in ODI World Cup, in T20 World Cup, where we felt like Virat Kohli is coming back, right? But he was never the same player. So मुझे लगता है I think in the end people will move on. Maybe one series would have been perfect closer for his. Yeah, I mean, we moved on from Tendulkar, Dhoni, Kohli. So it's a cycle. Some great players का भी एक time आता है, but I'm glad that they both ended up on high note, winning the World Cup and Champions Trophy. So I know they're not fully retired yet, but kudos to them. We have like 10 days maybe. I don't know, like Sharma will play 27 World Cup. मुझे लगता है कि he will be forced to retire from ODIs as well. Totally depending on, I guess recently नई series announced हुई है न्यूजीलैंड के साथ, next year they will play that. So मुझे लगता है like few more days to go for their career. But the difference between Tendulkar and Kohli was like जब Tendulkar retired, Kohli was already there as a star, right? Like he had a right. मुझे याद है like when Tendulkar retired, कोलकाता में second last test match था. I was there for planning for there to 5 days, right? Match 3 दिन में खत्म हो गया, but I can remember the way people were turning for Tendulkar, right? Maybe a farewell series, a farewell game would have been the great see-off for both of them, right? But so we had Kohli when Tendulkar retired. Now we have kind of Gill or Jaiswal when Kohli retired. So we have the जिसपे हम बेट्स कर सकते हैं कि ओके इंडियन क्रिकेट को फॉरवर्ड ये 4 प्लेयर ले जाएंगे. सो आई एम ऑप्टिमिस्टिक. लेट्स आल्सो टॉक अबाउट अ प्लेयर जो 8 साल बाद इंडियन टेस्ट टीम में आए हैं, करुण नायर. आई नो he got a duck for first innings, but what a journey, and I'm sure काफी कुछ he's gonna make a big memorable test series for himself this summer. I think amazing story, right? If he turns around, मुझे लगता है कि he can only make an impact now, like whatever 2-3 years he has remaining. But मुझे लगता है he should have batted one down. I think he had a good form going into this series. He played 6 matches before. I don't know why he was dropped, but I think he should have been given like chance at number 3. So मुझे लगता है like he will play well. I think I remember उन्होंने tweet किया था like God give me one more chance, right? Or cricket give me one more chance, and he got it, right? Like he worked hard. So I don't know like how it goes. Like it will depend on his luck, his destiny, where he ends up. But I know players like Misbah, right? Like who kind of made an impact late in their career, like for 7-8 years. So Mike Hussey, right? Yeah. So he could have that kind of career where he plays like 45-50 test matches and then like win some for India, right? Like maybe score 5,000 runs, make some good impactful centuries, chase some targets, right? That's what he can do. He could do what Sky is doing for us in T20. Even though age is not on his side, but he's contributing as much as he can. So, but I think great example of a journey where like if you work hard, आप वापस आ सकते हो टीम में. Despite all the politics, all the controversies, if you perform, all those could be ignored, right? I think it's an example for Prithvi Shaw. Like it's never too late to make a comeback, right? It's just you have to start working on it. But yeah, I'm hopeful and wish him good luck. But yeah, let's see how the day 4 goes. I'm optimistic. First innings, first session will determine कहाँ tilt हो रहा है game. अभी तो I would say slight edge to England, but we'll see. Any prediction for the target? I would say 300 we need at least. So मतलब अगर डिक्लेयर करने की आज डिक्लेयर तो नहीं करने वाला अगर पूरा भी बैट खेला because baseball you don't know, you don't want to take the risk. I think anything less than 350 मुझे लगता है इंग्लैंड जीत जाएगी. तो हमें और काफी रन मारने पड़ेंगे. So I think it will all depend on how KL Rahul goes and Gill maybe, but it will come down to like Jadeja and like they'll have to play some cameos. मुझे लगता है कि it will be tough. So, but yeah, I'm predicting like we'll have like target of 270 to 80. Yeah, let's see. We'll see who performs tomorrow, and then we'll hope for the best. All right, yeah. All right, we'll be back tomorrow with day 4 update. So stay tuned.
बाय, थैंक यू।